Hello dear student, welcome to GAYAS classes for mathematics set math lecture 13 के अंदर आज हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट टू 3 रेफर टू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये ग्राफ गिवन है आपका, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज शोन इन द डायग्राम एबव। इसका ग्राफ का क्या इक्वेशन आएगा ये आपको फाइंड करना। तो आप जानते हो कि विच ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द पॉइंट स्लोप। जब आपको पॉइंट गिवन हो, सपोज करो पॉइंट आपके पास है x1 y1 एंड सेकेंड पॉइंट आपको दिया गया है x2 y2, देन इक्वेशन क्या फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। तो सपोज करो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y, तो आपको y minus y1 that is y1 is what 2, so this is y minus 2, again y2 minus y1 that is minus 4 minus 2, so this is minus 4 minus 2 upon x2 minus x1 that is x2 is what, that is 4 or x1 is minus 4, so minus minus plus into x minus x1, x1 is minus 4, so this is plus 4. Okay, so this one y minus 2 equal to, this is minus 6 and this is 8 into x plus 4. So 2 3 ja 6 and 2 4 ja 8. So you will get y minus 2. Y minus 2 equal to, y minus 2 equal to minus 3 by 4 into x plus 4. This is correct answer. So the A is y minus 4, B is y minus y plus 4, y minus 4. You see what is the option number C? ऑप्शन सी हमारा क्या है, चलो देखते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में आप देखोगे, ऑप्शन सी आपका है y माइनस 2 माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस 4। तो हमारा राइट आंसर आ गया सी ऑप्शन, y माइनस 2 इक्वल टू माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस 4 इज करेक्ट आंसर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारा क्या है, तो सेम क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, यहाँ हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेम ग्राफ से ये क्वेश्चन है आपका, तो उसी पॉइंट से आप इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये आपका इक्वेशन है, इसी को आप चेंज कर सकते हो, y फ्री करो। अगर आप इससे y को फ्री करते हो तो y को फ्री करोगे तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू आएगा हमारा माइनस 3x अपॉन 4 एंड दिस इज माइनस 3/4 इंटू 4. Okay, and this minus come here, that is plus 2. So this 4 and 4 cancel out, so you will get y equal to minus 3x by 4 and this is minus 3 plus 2, so this is minus 1. So the answer is y equal to minus 3x by 4, minus 3x by 4 minus 1, so your answer is B. So this is correct answer. Answer second, which of following the equation of the line in the slope intercept form. To change this equation in this form, just take from y. So y equal to minus 3x by 4 minus 1 is the right answer. Okay. Now you see the third question. And the third question is also very easy. Third question भी हमारा काफी important है। ये third question क्या, ध्यान दो। This is third question. तो third question में आप देखोगे, there are which of the following is the equation of line in the standard form. कौन सा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अपने सेम इक्वेशन को हमें चेंज करना है। तो सेम के लिए आप पहले अगर फॉर्मेट लगा दोगे, दैट इज y माइनस y1 हमारे पास 2 था, तो y माइनस 2 इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 4 माइनस 2 दैट इज माइनस 6 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज 4 प्लस 4 8 into x minus x1 that is plus 4. Okay, so 2 3 ja 6, 2 4 ja 8. So this is 4y minus 8 is equal to
minus 3x and this is minus 12. So you will get this is 3x minus comes LHS 3x plus 4y and this is minus 12 and this is plus 8. So right answer is 3x plus 4y equal to minus 4. This is right answer. So option 3x plus 4y minus 4 is option D. So this answer D is correct. Now नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4. चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है. फोर्थ क्वेश्चन तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि दैट इज इन 2005 120 students and Lincoln High School had smartphones. कह रहा है कि दैट इज बाय 2010 345 students in the same school had a smartphone. So which of the following best describe the annual rate of change in the number of smartphone students from 2005 to 2010 at the Lincoln High School. तो आपको ये बताना है कि इसमें क्या रेशियोज है उसके. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है कि डेट इज 2005 में आपके पास था 120 स्टूडेंट और 2010 में कितने हैं 345 स्टूडेंट. ओके. Which of the following has described the annual rate of change in the number of phones? तो आप देखोगे कि that is 2005 to 2010. तो ये हमारे पास है 345 और ये हमारा है 120. तो 345 माइनस में आपका आ जाएगा व्हाट 120 और यहाँ आपके पास क्या है that is 2010 to 2005. So this is 2010 minus 2005. So you will get what 5, 4 minus 2, 2, 3 minus 1, 2. Right? And this is 0 minus 1, 10 minus 5, 5. And this is 0 and this is 2010, 2005. 2005. So this is 5. So 5, 4 ja 20, 5, 9 ja 49. So 5, 4 ja 20. 20 and 5 that is 45. So this is 45. That is the average increase in the number of smartphone is 45. So your answer B is correct. So difference of y coordinate that is 345 minus 120 and upon difference of x coordinate that is 2010 minus 2005. So this is 225 upon 5. So 5 4 ja 20, 5 5 ja 25. So this is 45. Now see next question, question number 5. So ये question 5 है. Which of the following is the equation of the line that passes through the point 4 minus 1 and has slope minus 2? So you know formula of equation क्या है. अगर slope मालूम हो तो y minus y1 equal to m into x minus x1. तो y1 आपके पास -1 है. So this is y plus 1 और slope दे रखा आपका -2 into में x minus x1. Then y plus 1 equal to minus 2x plus 8, right? So 2x plus y equal to 8 minus 1. So 2x plus y equal to 7. This is the right answer. So D option is correct. तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए कि यहाँ पे आपको मैथ्स की सारी क्लासेस आपको मिलती रहे. थैंक यू.